Okay, so we continue. So we have here inserting the residue, so that residue would be 1 upon under root pi into r uh, k plus iota eta e to the power iota k plus iota eta into r whole divided by 2 times k plus iota eta. So we cancel out these quantities here. So we cancel here. So what is remaining here would be, in fact, e to the power iota kr and e to the power minus eta into r. So that is the remaining factor. So this is e to the power iota kr times e to the power minus eta r over r. So this is the factor, and if we जैसे हमने कहा था initially that eta would tends to 0, so taking limit eta tending towards 0, then g plus जो है g of r would be equals to e to the power minus iota k r over r. So this is in fact one factor, uh, और माइनस इधर प्लस हो जाएगा. सो वी कॉल इट एज प्लस, वेयर प्लस जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? इट इज बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव इमेजिनरी शिफ्ट that is in the upper half of the complex plane. Yeah, where plus subscript uh, is used for positive imaginary shift of theta. Yeah. Similarly, if n were taken as negative, similarly, if eta is taken as negative, so क्या हो जाएगा? G minus हो जाएगा, G minus of R, which is equals to E minus iota kr over R. So we have two solutions. Yeah. So G plus को हम कहते हैं, this is basically outgoing spherical wave. Or in terms of Green's function analysis, it is known as the retarded Green function. So we have G plus and G minus. So G plus को कहा जाता है as an outgoing spherical wave. और इसको कहते हैं in terms of Green's function analysis, it is known as retarded Green's function. Retarded इसलिए कहते हैं कि as we go away from the scattering center, the amplitude of this scattered wave is decreasing, so it is retarded Green's function. Similarly, there is G minus. G minus is in fact has an incoming spherical wave, has an incoming spherical wave, और इसको क्या कहते हैं? It is known as advanced Green's function. So this is advancing towards the scattering center. So इसका मतलब है कि we have two solutions. So half of G plus plus G minus, और इसको आप लिख सकते हैं as cos of KR over R. अगर इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये would have in fact this quantity, और ये क्या चीज होगी? This would be a standing wave.
is a standing wave and is another form of form of Green's function. Other form of Green's function. Okay. Now we will have two types of solution. एक करस्पॉन्ड करेगा प्लस को और एक करस्पॉन्ड करेगा माइनस को, और हम इसको साई प्लस और साई माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे. Therefore, now we'll will have two solutions. कैसे? यानी साई के ऑफ प्लस माइनस ऑफ आर. मीनिंग इसका मतलब क्या हो जाएगा? वी कुड राइट साई प्लस माइनस ऑफ आर जो के है, this would be equals to n e to the power iota k dot r here minus 1 upon 4 pi integral d3 r prime times e to the power plus minus iota k r minus r prime whole divided by r minus r prime का mod into u of r, इनिशियली जो हमने फॉर्मूला लिखा था, into psi k of plus minus of r prime. This is basically the integral. Now we see here an asymptotic limit as r tending towards infinity. Then the approximation जो बुनियादी तौर पर r minus r prime है, इसको हम approximate करेंगे फार्मूले से. So we are basically looking for some asymptotic solution. So for some asymptotic solution with the limit r tending towards infinity, then one makes an approximation, और वो approximation क्या होगी? Approximation on this exponential factor above, or that approximation would be k times r minus r prime, and this is equals to k into under root r square minus 2 times r dot r prime plus r prime square. और this अगर मैं इसको ओपन कर लूं तो we would have k r minus k, or then k into r cap in normalize कर ले वेक्टर्स को, that is basically r वेक्टर को normalize कर ले, और r वेक्टर को normalize करने का मतलब है k prime is equals to k into r cap. Yeah, so we would have a normalization factor, that is जो हम इस्तेमाल करेंगे जिसकी वजह से ये r cap आ गया. So similarly the higher order terms क्या हो जाएंगी? r cap times r prime vector whole square upon 2r plus so on. अब approximation is that we keep the leading terms, keeping only the first two terms, which is like the dipole approximation. So similar to dipole approximation, let's take just two terms, first two terms in the exponential, and only the first term in the denominator. So for the case of exponential, we take only the first two terms, and for the denominator, we take just the first term. So इसका मकसद हो गया let's say keeping only the first
two terms, and so first two terms, i.e. first two terms for exponential, and first term for denominator. तो आपका जो फॉर्मूला है that would change to psi k plus minus of r, which is equals to approximately n times e to the power iota k dot r. Yeah, so the prime नहीं है इधर, minus e to the power plus minus iota k r whole upon 4 pi r integral d3 r prime e to the power minus plus, because अंदर साइन है माइनस का, इस वजह से साइन उलट जाएंगे, आयोटा के प्राइम डॉट आर यू ऑफ आर प्राइम साई प्लस माइनस ऑफ आर बार प्राइम। ये आपके पास है। यहाँ पर आप जो के फैक्टर है, जो आपने के कैप लिया हुआ है, दैट इज बेसिकली के इनटू आर कैप। सो इस वजह से ये आर कैप आया है, आपने नॉर्मलाइज कर लिया डिस्टेंस को। तो so is similar to in fact wave vector of a spherical wave is like a wave vector for a spherical wave। yeah? So आपके पास जो इनफैक्ट सोल्यूशन है, सो इनफैक्ट ये जो आपके पास फैक्टर आए ई टू द पावर, ये जो फैक्टर है, ये जो फैक्टर आपके पास मौजूद है ई टू द पावर प्लस माइनस आयोटा के आर अपॉन आर का फैक्टर है, इस फैक्टर की मौजूदगी में वी कैन कंपेयर दिस विद आवर ओरिजिनल स्टार्टअप इक्वेशन। सो वी कैन से इन द presence of e to the power plus minus iota k r over r, the psi k of plus minus has the form, कैसा has the form जो बिल्कुल इनिशियल इक्वेशन हमने लिखी थी, and that form is in fact psi k of plus minus r, which is in fact approximately equals to n times e to the power iota k dot r plus e to the power iota k dot r, sorry, kr upon r into f of k plus minus of r। ये हमने जो लिखे हैं, एंड f of k plus minus of r जो है that would be equals to -1 upon 4 pi capital N integral d3 r prime e to the power minus plus iota k prime dot r prime in fact u of r prime psi k plus minus of r prime। This is what, so we have made some इस तरह से करने पर we have some results, some concrete results for the sketching cross section। अब यहाँ पर एक assumption करेंगे which would differentiate this procedure from the partial wave analysis, so which is known as Born approximation। Born approximation, and what is that? We consider for weak scattering, for weak scattering, what is weak scattering? Weak scattering का मतलब है
weak scattering implies that Fk of R upon R mod square is very much less than the energy of the incoming beam K dot R. Yeah, so this is basically mod square. इससे कम है. So then we can use an estimate. हमने कहा था ना हम इटरेटिव प्रोसीजर करेंगे, तो इटरेटिव प्रोसीजर के अंदर उस इंटीग्रल इक्वेशन को जो एफ के ऑफ प्लस माइनस ऑफ आर है उसके अंदर राइट साइड पर साई के ऑफ आर है, तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा कुछ इनिशियल wave function. So we use an estimate. So we use an estimate for this, estimate for psi k of plus minus of r. And what is that estimate? हम psi k of plus minus of r हम estimate ले लें, that is n times e to the power iota kr, because हमने यहाँ assume किया है कि basically f k of r upon r mod square is much less than the incoming the probability density of the incoming wave. That is दूसरे लफ्जों में यहाँ पर हम इसको क्या कह रहे हैं, फ्री वेव. सो अब हम इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे अपने इंटीग्रल में ऑन द राइट हैंड साइड, और अगर आप इसको सब्सटीट्यूट करें अपने इंटीग्रल में ऑन द राइट हैंड साइड, देन यू कैन सॉल्व द इंटीग्रल. सो इंसर्टिंग so we would say then insert this into the formula, into the formula for fk. So and we would consider the case of the outgoing wave, यानी psi f के प्लस वाले लेंगे, f के माइनस वाले लेंगे, and taking the case of outgoing spherical wave. So क्या हो जाएगा, this would be fk of r, which would be equals to minus 1 upon 4 pi n integral d3 r prime e to the power minus iota k prime dot r, yeah, r prime, and then we have 2m upon h bar square. ये u की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, v of r प्राइम, और हम एफ के की वैल्यू जो इनिशियल एस्टिमेट लिया है हमने साई के का, दैट इज n इंटू ई टू द पावर आयोटा के डॉट आर, ये ले लिया. एंड अगर हम इसको देखें तो दैट इज बेसिकली, दिस इज इनफैक्ट जो हमने सिर्फ आउटगोइंग वेव के लिए लिया है, सो दिस इज इनफैक्ट प्लस ऑफ आर के साथ. या सो हमारा क्या आ गया, एफ के ऑफ आर जो है दैट इज इक्वल्स टू किसके बराबर, माइनस एम अपॉन 2 पाई h bar square integral d3 r prime e to the power iota k minus k prime into dot r prime v of r prime. This is basically for first born approximation. And the scattering is into the direction of k prime is equals to k r cap. So it does make sense to rename fk of r as some effective amplitude for being scattered incoming wave into an outgoing wave. So basically this is क्योंकि हम फाई के सॉरी एफ के प्लस की बात कर रहे हैं, सो वन कुड थिंक इन दिस मैनर. सो नाउ सो बुनियादी तौर पर ये आर्टिकल यहाँ पर ख़त्म हो रहा है. जस्ट कुछ बातें हम डिस्कस यहाँ पर कर सकते हैं कि ये जो आपके पास इंटीग्रल आ गया, अब इस इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है. सो इसका मतलब ये हो गया, इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस इंटीग्रल, वन नीड्स टू नो इज द potential of the target particle.
that is V of R. If one knows that potential of the target particle, then Fk of R आप निकाल सकते हैं, और if you know the Fk of R, then आप psi k of R निकाल लेंगे, जो हम initially equation लिखी थी. Yeah. So in general sense of perturbation theory, this can be thought as the incoming particle has been allowed to exchange uh, some single momentum, क्योंकि k लिखा हुआ है ना, हमने याद है, हमने कहा था कि सबस्क्रिप्ट में जो k है वो करेक्टराइज कर रहा है वन कंपोनेंट को. वन कंपोनेंट से मुराद ये है कि सिंगल सिंगल कंपोनेंट, सिंगल क्वांटा ऑफ मोमेंटम दैट इज स्कैटर्ड इन द आउटगोइंग particle. So the result in the formula is a very simple result, and we only need to calculate the Fourier transform of the potential, and then you get this Fk of R. So we could say, okay, in general sense, so in general sense of perturbation theory, this can be thought of, it can be thought of uh, as the incoming, incoming particle, or the beam of particle, incoming particle has been allowed to exchange some single quantum of momentum with the scattering potential, Yeah. So basically the result in this formula जो आपको ये नजर आ रहा है K of R ऊपर, is very simple. And why it is simple? Because we just need to calculate the Fourier transform of the potential. The so the result above is simple as one just need to calculate the Fourier transform Fourier transform of the potential and then basically then the result would depends on the momentum transfer. So this is a very simple analysis. So अगर हम इसको sum up करें, so we started with the assumption that we have two parts, the incoming beam and the outgoing beam. Or in the outgoing beam we have that factor which is Fk of R, और उस Fk of R को we substituted as Fk of omega, and then we want to solve this equation, differential equation, Schrodinger differential equation, and we solve that Schrodinger differential equation using Green's function. Yeah, so solving the Green's function meaning or imply that we need to find out the Green's function. To find out Green's function in some momentum space, we need to do the Fourier transform,
and then we use then using that result हमने बुनियादी तौर पर Green's function निकाल लिया after solving the in fact complex contour. Yeah. So this is a simple theory जो scattering theory कहलाती है. इसमें ये आपने इसका कुछ हिस्सा आपने मास्टर्स में या बीएस लेवल पर किया होगा. हमने इसको इन डेप्थ और इन डिटेल कैलकुलेशन की है. आप इसको थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा और इसमें से जो मिसिंग स्टेप है उनको निकालने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है. नेक्स्ट में हम जो है वो पार्शियल वेव एनालिसिस करेंगे. ये दोनों करने के बाद फिर हम स्कैटरिंग का टॉपिक करेंगे इन टर्म्स ऑफ एज टाइम डिपेंडेंसी. दैट इज वी वुड बी सॉल्विंग टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन रादर देन टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, जो कि अब तक हम करते आए हैं. या सो but before going into time dependent domain, yes, हमें partial wave analysis को थोड़ा सा देख लेना चाहिए, because that partial wave analysis correspond to scattering, where we are saying that the potential of the target is much greater than the energy of the beam, and so that would be some other case. ठीक है. तो अगेन हम ई ग्रेटर देन जीरो जरूर होगा, यानी उसके अंदर भी इनकमिंग पार्टिकल जो हैं उनकी एनर्जी इज ग्रेटर देन जीरो. बट देन वी वुड बी अज्यूमिंग दैट जैसे हमने यहाँ पर अज्यूम किया कि बेसिकली एफ के ऑफ अपॉन आर मॉड इज लेस देन ई टू द पावर आयोटा के डॉट आर. वहाँ पर इन पार्शियल वेव एनालिसिस में वी वुड थिंक अबाउट एज ग्रेटर देन ई टू द पावर आयोटा के डॉट आर. ठीक है ना.